Now if you look at there are two parts are there in sales preparations. One is that called golden hours, another is called is platinum hours. Golden hours means at the time you are selling, actually trying to earn revenue. This is your golden hours, and platinum hours is your preparation hours. अब क्या होता है, ये है टाइम मैनेजमेंट चार्ट. टाइम मैनेजमेंट, that means you got a 4 kinds of job. Some jobs are very urgent, some jobs are not urgent. अर्जेंट का मतलब होता है अभी करना है कि बाद में करने से भी चलेगा, इस तरीके का बोल रहे हैं. और कुछ जॉब्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी सिग्निफिकेंट एंड नॉन सिग्निफिकेंट. we Indians are very very bothered about this sector. कुछ रीजन से अर्जेंट एंड अर्निंग मतलब बहुत इंपॉर्टेंट काम है और अभी भी करना होता है. Now, if you are somehow managing your stuff in this manner, that means in your life, अगर बहुत सारे लोगों को मैं देखता भी हूँ, always busy, नहीं अभी ये करना है, अभी वो देना है, अरे बाप रे बाप बहुत सारा काम पड़ा है, पता नहीं कैसे करेंगे, always they're stressed up, worked up kind of thing. So I safely assume that they are doing everything urgent and important basis. For me, they're absolute inefficient persons. For me, आपकी अगर मोर देन 70% जॉब इस लेवल में आते हैं तो आप प्लान नहीं करते हो या बहुत ही ढीले हो. जैसे बोलते हैं कि लेजी पीपल, जब होगा, जब अभी तो नहीं बोला है, जब बोलेगा तब मैं देखूंगा. नाउ एक्सेप्ट फ्यू जॉब्स. नाउ सेल्स में तो ये होना नहीं चाहिए. सेल्स में यू कैन प्लान इट, वेरी फ्यू टाइम्स यू विल गेट इट, रफली 30% टाइम यू कैन हैव इट. ये रहेगा, यू कैन नॉट अवॉइड इट, यू कैन नॉट मेक इट अ जीरो, ट्रस्ट मी, ये रहेगा. बट यू नीड टू रिड्यूस इट एज मच एज पॉसिबल. 20-30% इज गुड, बट 50% से ऊपर अगर सेल्स में चला जाता है देन प्रोबेबली इट्स अ प्रॉब्लम फॉर यू. नाउ आई कैन नॉट ब्लेम मिलिट्री, देन फायर फाइटर, देन पुलिस, बिकॉज देयर जॉब इज ऑलवेज अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट. आप उस जॉब में नहीं हो. वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल सेल्स जॉब, राइट? सो दैट हैपेंस. Second part is there are certain job which is not urgent but very very important. That means preparation for customer base. How can you plan for next quarter sales or this year sales? Have you planned it? Which are the customer will you offer? What will be your sales pitch? Have you prepared for this meeting? ओके, आपको अगर पता है महीने का 2 तारीख को आपसे रिपोर्ट मांगा जाता है, कैन यू प्रिपेयर इट ऑलरेडी व्हेनेवर यू गॉट अ टाइम? सो दिस इज कॉल्ड इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट. अभी करने की जरूरत नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, कर रखेंगे तो बाद में आपके लिए सुविधा होगा. दिस इज कॉल्ड द प्लानिंग पार्ट. नाउ as long as you are young, for example I'm giving you in a life example, say as long as you are young you can eat anything. आप रोज ही जंक फूड खाइए, कोई मतलब नहीं है. एक्सरसाइज मत कीजिए, कोई इश्यू नहीं है. Now this is important job but not urgent. But maybe after 40-45 hours के बाद suddenly you got to develop a heart disease. Now what happened? आपने पहले काम नहीं किया था, इसीलिए तब वो क्या हो जाएगा, अर्जेंट भी हो जाएगा और इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा. Now हार्ट को बचाना भी, एक्सरसाइज भी करना है और बाकी सब भी मैनेज करना है. Got it? Look at this part, urgent but not important. That means I am not doing. It's somebody else's job. Like I said ना, suddenly headquarter calls and say कि I need this report. ये मेरा काम थोड़ी ना है. It is actually others' work. Got it? And finally, क्या होता है? ये वाला part. Internet, then social media, chatting, gossiping. These are coming this sector. Now, if you really want to enjoy your life, you should have only one option. इस फील्ड को बड़ा कीजिए, इस फील्ड को बड़ा कीजिए. प्लानिंग करना सीखिए. लुक एट दोस पार्ट विच इज इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट. अभी काम नहीं आएगा. नाउ फॉर एग्जांपल व्हाट हैपेन, आई गिव यू सर्टेन असाइनमेंट. ओके, यू आर सपोज टू सबमिट इट टुमारो. ठीक है, बट नेक्स्ट डे, और ठीक है अभी देने के बाद आफ्टर 2 आवर्स के बाद मैंने ये बोल दिया कि चलिए कल सबमिशन की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूं कि कब देना है.
तो यू गाइस आर वेरी रिलैक्स, ठीक है अभी तो मांग नहीं रहे, जब मांगेंगे देखा जाएगा। ना अब में से शायद कोई कोई लोग होगा वो ऑलरेडी असाइनमेंट प्रिपेयर करके रखेंगे। दे विल थिंक दैट अरे कभी ना कभी जब मांगेगा मेरे तो प्रिपेयर, it's better that I should prepare it, right? And few people will say, okay, whenever you'll say, I'll do that. Suddenly, after 3 days, I asked in this, okay, you got it 2 hours, just complete it and do that. Now, what happened? It's all about urgent and important situations. Now, then you will be under pressure. Abhi kaise karenge? Or maybe you know the subject you could not perform because there is a sudden time pressures. Have you prepared it as per your deadline? So it is better for you. That means self-discipline is a matter. Now, social media, all these are good or bad? It depends the way you are using it. There are many people who are spending 10 hours on a social media. The question is, what are they doing? They are actually creating leads and selling material. It's okay, absolutely. That means you are doing something productive. आप कुछ earn कर रहे हो social media में इतना दिन बैठ के, इतना देर तक बैठ के. But if you are just chatting or looking at YouTube videos and doing nothing, so क्या हो रहा है कि you are engaged, others are earning money, but आपकी productivity is going to hell. So ask these questions. What are you doing in a social media? Do it. Keep in touch. ये भी जरूरत होता है. But always use this. See, these kinds of things are just like a drug. Addictiveness है तो है. Can you use it in a positive manner? Definitely you can use it. Finding out your prospective customer, looking for various new product, updating yourself with new technologies. Lot of informations are floating in the social media. Okay, connections with the better people. So that is how you can use social media only, or keeping touch with the customer. If that is your goal to access social media, absolutely okay. आप spend कीजिए time, but not तो प्रॉब्लम है. अच्छा, इन केस में ये जो अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट, इनमें क्या करना है, थोड़ा सा डेलीगेट करना भी सीखिए. थोड़ा सा आपको अवॉइड करना आना चाहिए. कैसे आप करेंगे, दैट्स अप टू यू. फॉर एग्जांपल, आई एम बिजी ऑलरेडी, आई एम वर्कड अप विद दिस, कैन यू प्लीज टेल समवन टू डू दैट, because this is not your job, you are doing others job. Got it? Okay, any comment or any questions here? Other problem is that with the persons, they are not interested, they are not showing any interest, bored, not answering your call, you are asking something, they are not, responding to you, or sometimes you are feeling very sick. Okay, so whenever you're into the sales profession, please understand one thing. You can't have excuse regarding your health, to be very frank. That's the truth. Somehow you need to manage the show. So take care of your health. Any profession, let me tell you, any professions. So take care of your health. Okay, so that's all. Fine. Okay, so there are a couple of tips. I think you guys know it. Like if I encourage you to speak and I am here to listen to you, how should I do that? Encouraging. Okay, I see. Yeah. Okay. Great. Please go on. I'm all ears. I'm listening to you. Right. So encouraging you. So that means you feel like, ठीक है, चलो ये बंदा सुन रहा है, तो मेरे को भी बोलने में आसानी होता है. Then also I can say, I really understand. How do you feel? Yeah. If this happens to me, probably I would have reacted that way. So one kind of sympathizing, empathizing. Okay, ये हो सकता है. अब मैं पूरा आपसे सहमत हूँ. Encourage करना, ठीक है ना? Sometimes what happens, whenever we are hearing anything, any speech or anything, already we started framing questions in our mind. So in that moment, what happened? We miss the listening portions. Clear cut. If you have something, anything, just point it out, write it down somewhere. And then whenever it's finished, then you ask these questions. Okay. But listening part generally miss ho jata hai. And we have a nature as a human being. Okay, right. Let me take this point, and this point is quite interesting. Like we may add our words or experience so that they may feel we are interested. Should you do that? Should you do that?
Okay, let me put my question. Someone of you has says that we may add our words and also our experience so that they may feel we are really interested at the time of listening. Now, okay, yes, I think we can. Okay. Definitely you can, no doubt about that. But point is that very carefully, do not elaborate. Do not elaborate. Like for example, let's say you are asking me something about career choices. For example, think this is the scenario. I'm listening, okay, and you said that I am very confused, and then I don't know what to do. So at this moment, I must only say only a few words only. Let's say, okay, exactly that happens to everyone. Even I also felt the same way when I was young or at your age. I think this is good enough. Now, if I start launching my story, you will lose the patience of telling me your story. ना अगर मैं ये बोलना शुरू कर देता हूं कि जब 1-to-1 सेशन में जनरली हम लोग नहीं करते हैं ये चीज, स्ट्रिक्टली ये मना होता है. ये फोकस लेवल में, ये ग्रुप लेवल में, ब्रॉडकास्टिंग लेवल में आई कैन टॉक अबाउट माय एक्सपीरियंस एज मच एज आई कैन. बट इफ 1-to-1 में इफ आई टेल यू स्टार्टेड करियर चॉइस एंड आई स्टार्ट, क्या हुआ था मेरे साथ जब मैं बचपन में था, 12 में था, तब ऐसा हुआ था, तब मैंने ये किया वो किया. यू फील लाइक लॉस्ट एक्चुअली. तब आपको लगेगा अरे भाई मैं मेरा बात बोलने आया हूं. To make you feel interested, I think it's good enough to talk or finish within couple of words or maybe one sentence. Exactly, I completely agree with you and I feel the same way. That's it, good enough. Do not launch your story. Now सामने वाला खो जाएगा. He will be lost automatically. He will be impatient. I am here to tell my story. I am not here to understand what you have gone through. Are you getting my point? ये ब्रॉडकास्टिंग या सेमिनार या ट्रेनिंग में अच्छा लगता है. 1-to-1 में दिस इज नॉट अ गुड वे टू स्टार्ट. होप am I clear what I'm trying to say? No, it's not a good strategy. Let me tell you, this is not a good strategy. The reason is, sometime at this experience, at this my level, I know many people, they are faking their stories and this experience. And trust me, आपको ये 5 साल लगेगा समझने के लिए. You start walking after 5 years के बाद आप समझ जाएंगे. Sometimes क्या होता है, we are too blind or we are too much impacted by someone's personality. तो हम लोग ये believe करने लगते हैं. थोड़ा सा आप अगर logically सोचेंगे ना, you will definitely get a clue whether this person is saying the real truth or having some faking experience. बहुत सारे लोग experience fake करते हैं. Matlab, I'm telling you, in my initial years of the business, what happened, I met someone. That person has a lot of good quality. Actually, he guided me so many things in the business. But whenever I didn't like anything, and I just told him, okay, this is I'm not comfortable with, each and every time he has some story to tell us. Now, first time is okay, second time is okay, third time, I ask myself, what a coincidence it is ना, जब भी मेरा कोई प्रॉब्लम होता है इसके साथ ऑलरेडी हो चुका होता है. कैसे? ये हो सकता है. आई एम नॉट डिनाइंग इट, ये हो सकता है. देन आफ्टर दैट आई लुक्ड एट हिज प्रोफाइल. थोड़ा डीप में जाके उनकी प्रोफाइल देखा. आई हैव सर्टेन टूल्स टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडीज बैकग्राउंड चेकिंग एंड ऑल दो. और देन आई अंडरस्टैंड इतना तो पॉसिबल नहीं होता है इनके एक्सपीरियंस में. द वे ही हैज गॉट एक्सपीरियंस, ही कैन नॉट हैव दिस काइंड्स ऑफ फीलिंग्स. और बहुत मुझे अजीब लगा तब. एंड देन आई ट्राई टू टेस्ट हिम. तो ये थोड़ा सा इशू है, प्लीज अंडरस्टैंड. अच्छा है बट बहुत ज्यादा मत बोलिएगा. इफ यू हैव रियली दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, जस्ट से दैट आई हैव गॉन थ्रू दैट, आई रियली अंडरस्टैंड, आई रियली सिंपैथाइज विथ यू, बट डू नॉट एलोंगेट इट. कब बोलना है, कब बोलना है नहीं, वो भी बोलना है. आप कब बोलना है? When the person is asking you, now please suggest what should I do, then you can tell. Then you can tell. And with the declarations that, see, I cannot tell you what to do exactly. I can only explain my incidents. What happened at this time. I faced this situation and I
choose it like this because this was my agenda. This may be fitting for you, this may not be fitting for you. So ये थोड़ा सा आपको देखना है. At that moment it makes sense. But आप कुछ बोल रहे हो, मैं अगर मेरी स्टोरी स्टार्ट कर दूंगा, so it actually disrupt the conversations. Right? Is that okay? So hope I am clear what I'm trying to say. I don't deny it. I don't discard this statement, but please be careful, tactful. That's what I'm trying to say. Well, so let's rapport building questions. That's fine. We have already discussed. Okay, now let us look at how can you do it. We are out of stock. We are out of stock is not a very positive statement, to be very frank with you. Or maybe you can think it's a positive. So my question is, can you make it more positive? We are out of stock. लोग जनरली सोचते हैं कि आउट ऑफ स्टॉक का मतलब होता है बहुत ज्यादा सेल हो रहा है. नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है. मैं इस तरीके भी सोच सकता हूं कि आपका सेल नहीं हो रहा है तो इसीलिए आप स्टॉक में रखते ही नहीं हो. ये भी एक परसेप्शन कस्टमर में हो सकता है. So what you can say? Can you be a little more positive sounding with this statement? Anyone? Demand is very high. It's okay, one part. So what happened? You can do, somebody says demand is very high. No, it doesn't mean that I am outsold. So you should say that demand is very high so that we are actually oversold. Then you complete the sentences. Demand high होने के साथ stock में रहने का कोई relation नहीं है unless I clearly state that कि it is oversold. Oversold मतलब होता है जितना सेल होना चाहिए उससे ज्यादा की ऑर्डर बुकिंग आ रहा है, तो इसीलिए we are not putting anything in the stock. Now यहाँ पे कोई एज्यूम नहीं करना है. डिमांड हाई का मतलब ये नहीं कि स्टॉक में नहीं रहेगा. डिमांड हाई हो ही सकता है, साथ में मेरे पास स्टॉक में भी बहुत है. No, when we'll let you know when we'll get that product. No. This is a little bit passive. Our stocks will be filled soon. Again. So अभी क्यों नहीं है? The point is that अभी क्यों नहीं है? So that's why I said ना कि आपकी डिमांड बहुत ज्यादा है. आप बोल सकते हो, बट साथ में आप बोल दीजिए कि इसीलिए योर स्टॉक विल बी फिल्ड सून का मतलब ये नहीं होता कि ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया है और मे बी डिमांड बहुत ज्यादा है. हमें तो ये भी लगता है ना कि आप बनाते नहीं हो, ऑर्डर आने के बाद अभी ऑर्डर देके आप फुलफिल करोगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो लिटिल बिट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट यू नीड टू थिंक अबाउट. We will let you know when we get that product. No, passive. So matlab hanging in air actually. Now if you see this, we can't get until last moment. Now it's a negative, passive. Okay, let's see, we try. All we have left this demo unit. Now इसमें क्या होता है देखो, खाली एक ही स्टॉक पड़ा हुआ है. मतलब जो डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट होता है जनरली यहाँ पे नहीं बेचते, बट यूके में बेचा जाता है. I also bought one demo unit as a handycam, like 14 years back I bought handycam over there. So एक ही आइटम पड़ा था and it was I was getting it at a damn cheap price. ठीक है, अभी भी चल रहा है, खराब नहीं था प्रोडक्ट, बट वही एक डेमो यूनिट पड़ा है जो दिखाने के लिए. So what to do? Okay, now let us look at how can I say this. We are completely sold out. स्टॉक इसलिए नहीं है कि मैं बनाया नहीं हूं कि यह मतलब प्रॉब्लम है और हम रखते नहीं है. नहीं, पूरा ओपन हो गया है. ओवरसोल्ड और सोल्ड आउट, नथिंग इज देयर. इसके साथ आप थोड़ा सा जोड़ दो, द डिमांड इज सो हाई. ओके, like in the second question, if I say that they are selling so fast that we can't keep them in stock. So I am always trying to put certain positive aspect of that. Now we have only demo unit left. Rather than I'm saying immediately I can give you this display unit, that is very much at your disposal right now.
Now see, one of our stores might have it. नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है, बट मैं ये क्या बोल रहा हूँ कि let me check this inventory and talk to some of the other stores and let's see how fast can I get it. And look at the last one. In last statement, what do we say? It will take 3 to 4 weeks to come. On the other hand, we say if you order right now, then you will definitely get within this next. The same thing we are saying, try to sounding little positive. Got it? Okay. So this is actually, while doing these things, yeah, you can say that. You can say that absolutely. Like the products a lot so that this is over.